Greetings class, welcome to today's lecture. Today we will be studying about president and vice president as well. ठीक है? Now सबसे पहले before starting the academics of it and going into the constitutional provisions and everything, just president बोलने से हमारे दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? यूजुअली लोगों को लगेगा यूएस प्रेसिडेंट आता है, राइट? क्यों? क्योंकि यूएस प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड द हेड ऑफ द गवर्नमेंट एज वेल. But in India, when we think about the head of the government, the thing that comes into our mind or the post that comes into our mind is the prime minister, because the head of executive, real head of executive, is the prime minister. The president, on the other hand, is the head of the state, right? The head of the state is president only. Head of the state, prime minister नहीं है India में. Head of the state, president ही है. Now, if you remember from the preamble class, what was the preamble? How does the preamble start? We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign, socialist, secular republic. What republic? Sovereign, socialist, secular. ये ऐसा रिपब्लिक हम बनाना चाह रहे हैं. आप लोगों को मैंने बताया था कि रिपब्लिक का मीनिंग क्या होता है. What does republic mean? Republic means where the head of a state is elected. ठीक है? इंडिया में the head of the state is elected. The prime minister is elected. But now, many of you might be wondering, even I was wondering when I heard this, प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हुए तो मैंने कभी नहीं सुना अपने आसपास जो बचपन में, या फिर आप लोग भी the ones who have voted, you must have voted for the Lok Sabha, you must have voted for the Vidhan Sabha, the respective state assemblies, right? But have you ever gone to vote for the president? नहीं ना, मैं भी नहीं गया हूँ. तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में तो हम में से commoners, we haven't been, most of us might not have voted, right? Must not have voted, most of us. Only a few, अगर कोई देख रहा है former MP MLA, they do the voting. So the voting system or the manner of election of the president is indirect. Directly elect नहीं किया जाता है president को. Manner of election of the president is indirect. The rationale behind the indirect election by the कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स यू कैन से इज दैट कि बहुत ज़्यादा, एक तो इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शंस कराएंगे तो बहुत एग्जॉस्टिव है एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी के लिए. इट इज़ क्वाइट एग्जॉस्टिव फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी. प्लस द इनडायरेक्ट इलेक्शन इज इन हार्मनी, it's in harmony with the parliamentary form of government, right? We in India have a parliamentary form of government. We in India have the parliamentary form of government. But USA, for instance, it has presidential form of government, where the president is the head of the state as well as the head of the government, right? But in India, the president is not the real head of the government, okay? In Ram Javaya case 1955, it was held that the position of president in India is somewhat similar to the position of, it can be considered as parallel to the position of crown in UK, okay? Wherever the word the pleasure is used, है ना, अपॉइंटमेंट्स एंड एवरीथिंग में लिखा रहता है प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट. द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मतलब सिंपली प्लेजर नहीं है. ऐसे में तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट काफ़ी आर्बिट्री हो जाएगा. तो प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट मीन्स दैट इट इज बाउंड बाय द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स. ठीक है, ये बात है. नाउ हु इज द प्रेसिडेंट? मैडम द्रौपदी मुर्मू करंट ऑफ इंडिया. हु इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? मैडम द्रौपदी मुर्मू करंटली, राइट? नाउ प्रेसिडेंट, अभी लास्ट इलेक्शंस हुए थे प्रेसिडेंट के, ज़्यादा पहले नहीं हुए हैं, 2022 में, है ना? किसने किसने वोट किया था 2022 में? ये एक क्वेश्चन है, आप देखिएगा. इस पे अभी हम आएंगे व्हेन वी टॉक अबाउट द मैनर ऑफ इलेक्शन. बिफोर दैट, जस्ट अ डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is the head of the state and the first citizen of India. Also, he or she shall be the supreme commander of the armed defense forces. The president is the supreme commander of the defense forces. Only she or he can declare war and conclude peace. ठीक है? ये कहाँ 53(2) में दिया है, आर्टिकल 53 क्लॉज 2 में, supreme commander of defense forces. Now, where is the president talked about in the constitution? Before that, article 52, under article 52 to 78, this talks about the union executive. This talks about the union executive and starts with 52. Article 52 simply says that
अंडर आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंट, इतना ही है। आर्टिकल 52 प्रोवाइड्स फॉर अ प्रेसिडेंट। आर्टिकल 53 में इट टॉक्स अबाउट द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन। नाउ एग्जीक्यूटिव लिख देता हूं मैं, executive power of the union shall be exercised by the president or by the officers appointed by him. Now, आप जब कल को यूपीएससी एस्पिरेंट्स देख रहे हैं जो, और इवन स्टेट एस्पिरेंट्स व्हेन यू गेट प्रमोटेड टू आईएएस, सो टुमारो व्हेन यू विल बिकम आईएएस which comes under the cadre of all India services, you will get an appointment letter. आपको चिट्ठी मिलेगी अपॉइंटमेंट लेटर की, ठीक है, और यहाँ पे प्रेसिडेंट का साइन रहेगा। सो यू विल बी अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, वो आपको मिलेगा एक अपॉइंटमेंट लेटर। हालांकि द प्रेसिडेंट हरसेल्फ विल नॉट साइन और हिमसेल्फ, आगे कोई और दूसरा जब बनेंगे तो प्रेसिडेंट हरसेल्फ और हिमसेल्फ विल नॉट साइन दिस। यू विल, मतलब ऑब्वियसली द पर्सन और ऑफिसर्स ऑथराइज्ड बाय द प्रेसिडेंट, राइट। तो ये वही है, आपको यहाँ पे मिलेगा, वो प्रेसिडेंट के नाम से ही साइन हुआ जाएगा, खुद नहीं साइन होगा, वो कोई ऑफिसर करेगा उनके बिहाफ में, बट हाँ दैट साइन इज द प्रेसिडेंट साइन, इट इज़ कंसिडर्ड, क्योंकि वो उन्होंने ही ऑथराइज किया है ना। तो जल्दी से बनिए और लेटर लाइए प्रेसिडेंट के अपॉइंटमेंट का, है ना, ठीक है। नाउ आर्टिकल 52 हो गया, 53 हो गया। अब जो इंपॉर्टेंट आता है और काफ़ी टेक्निकल है ये समझने में, दैट इज़ द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। अच्छा, उससे पहले मैं बता देता हूँ आपको एलिजिबिलिटी, ठीक है। एलिजिबिलिटी फॉर दी ये प्रेसिडेंट पोस्ट, प्रेसिडेंट्स पोस्ट इज, नंबर 1 इज यू नीड टू बी अ सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। नंबर 2 द एज हैज़ टू बी 35, और ये इंडिया में ही मैंने देखा ये एज वाला सिस्टम थोड़ा सा अलग सा है। व्हेनेवर यू आस्क समवन्स चाइल्ड हाउ ओल्ड डिड ही टर्न, बर्थडे में आप जाएंगे ना तो लेट्स से कि 15 ईयर्स का हो चुका है बच्चा, यू आस्क टू हर और हिज मॉम, दे विल से दैट या 16 स्टार्टेड। आई सेड 16 स्टार्टेड, यू आर ब्लोइंग द कैंडल्स ऑफ 15 ईयर्स। तो ये 15 कंप्लीटेड ना, 16 अभी चालू है। तो ये जो चालू है वाला कॉन्सेप्ट है ना, ये यहीं पे चालू नहीं होना चाहिए। 35 जो है वो हो जाना चाहिए। ये कई लोग कहते हैं रनिंग है, रनिंग, तो रनिंग वनिंग नहीं होना चाहिए, कंप्लीट हो जाना चाहिए, यू शुड हैव अचीव्ड द माइलस्टोन। तो 35 ईयर्स ऑफ एज, सिटीजन ऑफ इंडिया, नो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, एंड शुड बी क्वालिफाइड टू बी अ मेंबर ऑफ लोकसभा। लोकसभा मेंबर के एलिजिबिलिटी में एक दो चीज़ें और हैं जो आपको पढ़नी होंगी, जब हम उधर जाएंगे पार्लियामेंट में तो पढ़ेंगे। प्रेसिडेंट अभी हम पढ़ रहे हैं, तो प्रेसिडेंट के इलेक्शन, द मैनर ऑफ इलेक्शन, द आर्टिकल 54 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ द ये प्रेसिडेंट। नाउ हु कैन वोट, who can vote in the, I'll not write it down because it's quite big, but I will explain you the process of election. Now who can vote in the election of the president of India? Indirect elections होते हैं। Now you must have noticed that we have legislative, in the preambles class also I mentioned this, that legislative council जो है वो 6 states में है अभी, बाई कैमरल लेजिस्लेचर जो कहते हैं, है ना। डू दे द लेजिस्लेटिव काउंसिल्स जो 6 स्टेट्स में है अभी, यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, एंड वन मोर, अगेन आई फॉरगेट दिस ऑल द टाइम, आई डोंट नो व्हाई, कर्नाटका आई गेस, राइट। सो यहाँ पे जितने भी वो हैं मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव काउंसिल, जो विधान परिषद कहते हैं, उनके मेंबर्स वोट नहीं करते हैं, ठीक है, बिकॉज दे आर नॉमिनेटेड और दे आर, इवन इफ दे आर इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, दे डू नॉट वोट। राज्यसभा में भी जो जाते हैं, दे आर नॉट विद डायरेक्ट इलेक्शंस बट इलेक्टेड रहते हैं। तो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स के जो इलेक्टेड हैं, यानी लेजिस्लेटिव काउंसिल्स, ये तो ये समझ लो कि पूरा ही नहीं है, ठीक है। पार्लियामेंट से वोट कौन कौन देता है, पार्लियामेंट से ना, मैनर ऑफ इलेक्शन, द इलेक्टोरल कॉलेज ऑफ दिस प्रेसिडेंट, इट कंसिस्ट ऑफ लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज,
प्लस यूटी ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। ठीक है, लिख देता हूं, है ना। तो आपको सॉरी डबल डी हो गया। हाँ, तो one thing important to note here is the electoral college of these all combined will form the electoral college, but ये सब इलेक्टेड होने चाहिए। लोकसभा में अमेंडमेंट से अभी हट गए वो एंग्लो इंडियंस वाले जो नॉमिनेटेड हुआ करते थे, बट हो सकता है आगे जाके हम नॉमिनेशंस ले आए या जो भी, या जब ये बना था कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन तब तो थे ना नॉमिनेटेड। नॉमिनेटेड मेंबर्स यहाँ पे नहीं होंगे, ठीक है। इलेक्टोरल कॉलेज में नॉमिनेटेड मेंबर्स नहीं होंगे, राज्यसभा से भी नहीं होंगे। राज्यसभा में 12 नॉमिनेट होते हैं प्रेसिडेंट से, इफ़ यू रिमेंबर, वेल दैट्स नॉट टॉट बट इफ़ यू नो, ठीक है, आर्ट लिटरेचर साइंस फील्ड से। तो राज्यसभा, लोकसभा, इनके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, रिमेंबर, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट एंड the elected members of the legislature of the states and the elected members of the union territory of Delhi and Puducherry। अब एक यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि इलेक्टेड मेंबर्स तो अभी जम्मू एंड कश्मीर में भी हैं, which has been made a union territory after its bifurcation। तो क्या यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के इलेक्टर्स वोट करेंगे? 2022 में तो दे डिड नॉट, उस समय तो इलेक्शंस भी नहीं हुए थे जम्मू एंड कश्मीर में, बट अभी कॉन्स्टिट्यूशनली दे कैन नॉट, बट द सुप्रीम कोर्ट हैज इंस्ट्रक्टेड टू रिस्टोर द स्टेटहुड एट द अर्लीस्ट, सो आई गेस दैट it should be restored. I mean, the center has also said that the union territory provision is temporary. Anyways, तो अभी वहाँ का है नहीं, but this is a good question. ये आ सकता है, हो सकता है, तो आप देखिएगा। Now, लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट असेंबलीज और यूनियन टेरिटरी दिल्ली और पुडुचेरी, है ना, यहाँ पे इलेक्टेड जो होंगे, क्योंकि यहाँ पे ये हाफ स्टेट्स कह सकते हो इनको यार, है ना, दिल्ली और पुडुचेरी को। जैसे कि यूजुअली वहाँ पे लगता है ये क्या, स्टेट्स में ही CGST और SGST लगता है, यूनियन टेरिटरीज में नहीं लगता, UTGST होना चाहिए। लेकिन दिल्ली में जब सामान बिकता है CGST SGST लगता है, इसको स्टेट की तरह ट्रीट किया जाता है उसमें। अब कभी दिल्ली, द वंस हु आर इन दिल्ली, इफ यू व्हेनेवर यू गेट द बिल यू विल सी दैट SGST लिखा हुआ है, बट दिल्ली इज अ यूनियन टेरिटरी। व्हाई? बिकॉज द रैशनल बिहाइंड दैट ऑल्सो गिवन इज बिकॉज इट हैज what you call state assembly, legislature, है ना। Now, value of vote of these member of parliament, this is very, याद करने की तो ज़रूरत मैं नहीं कहूँगा, बट कर लो। एक ये जो भी MP है, दोनों मेंबर्स ऑफ राज्यसभा या लोकसभा, इनकी वैल्यू जो रहती है इनके एक वोट की, सबकी सेम ही होगी। तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, टोटल पॉपुलेशन ऑफ नहीं टोटल, अरे यार ये तो MLA का है, सॉरी MP के वोट का होता है टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ ऑल MLAs हु पार्टिसिपेट इन दी, ये इनका हु पार्टिसिपेट इन द इलेक्टोरल कॉलेज डिवाइडेड बाय द टोटल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ MP ले दो, MPs, ठीक है। ये आ जाएगा वैल्यू ऑफ वोट ऑफ MP। ये तो फिक्स रहेगा सारे, वेदर इट इज़ एन MP फ्रॉम उत्तर प्रदेश विच इज़ द बिगेस्ट स्टेट इन इंडिया और एन MP फ्रॉम say a smaller state like Goa, the value remains the same, although the number of electors for the MP of Uttar Pradesh were larger as compared to Goa, right? But still MP का वोट सेम रहेगा, but the difference comes in the value of the state of value of the MLA's vote, ठीक है। MLA के वोट में हर स्टेट में अलग आएगा। टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट वैल्यू में आएगा इसका, MLA का टोटल पॉपुलेशन ऑफ स्टेट, राइट, डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ seats in the assembly, total number of
seats in the total number of elected seats, total number of elected, ठीक है, इंटू 1/1000 के उसमें किया जाता है ये। तो ये याद करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे जस्ट फॉर नॉलेज, है ना। तो एमएलए का वोट डिफर करेगा स्टेट टू स्टेट, राइट। एमएलए का वोट डिफर करेगा, पॉपुलेशन ऑफ स्टेट है ना, इस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द पॉपुलेशन ऑफ स्टेट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स, टोटल नंबर ऑफ सीट्स, ठीक है। ये है इलेक्शन। अब इलेक्शन का तरीका क्या है? इलेक्शन का जो तरीका है प्रेसिडेंट के लिए, उसको कहा जाता है ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन with by the means of single transferable vote. The manner of election of president is done by proportional representation method by means of single transferable vote, है ना। Electoral quota that one has to secure is number of votes polled, legitimate votes polled, I guess. Valid votes. Valid is the word that we use. Number of valid votes polled divided by 2 plus 1, मतलब 50 plus 1, 50% plus 1, सिंपल मेजॉरिटी। इलेक्टोरल कोटा अचीव करने के लिए जो दिया जाता है इसमें, ये प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन तो है क्योंकि प्रोपोर्शन में जा रहा है रिप्रेजेंटेशन, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट का मतलब क्या है? हर किसी को, द वोटिंग इज डन थ्रू बैलेट पेपर, सीक्रेट बैलेट, ठीक है। नाउ द वोटिंग इज डन थ्रू अ सीक्रेट बैलेट एंड आप लोगों के में एक, व्हेन यू विल, इफ एनी वन ऑफ यू विल बिकम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट टुमारो, वही पेन रखने, हाँ, तो आपको पेपर दिया जाएगा जब आप में से कोई एमएलए या एमपी बनेगा, तो एक पेपर आपको दिया जाएगा, उसमें रहेगा, let's assume, let's take a simpler example, right? Let's assume there are only 3 candidates who have applied for the post of ये, है ना। हालांकि 100 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि 100 तो लोग ही चाहिए आपको कैंडिडेट सपोर्ट करने के लिए। या इफ आई डिडंट टेल यू दिस इन द टाइम ऑफ एलिजिबिलिटी, then the president's candidature, the candidates who wants to apply for president, they have to be proposed by 50 electors and seconded by 50 electors, ठीक है। तो 1 उतना important नहीं है। 1 academically, 1 2 3, let's say there are 1 2 3 candidates are standing, A B and C, ठीक है। 1 2 and 3 आपको दे दिया जाएगा बैलेट पेपर में। You put your preference, suppose you put B here, you put C here, you put A here, ठीक है, और you put A here, you put B here, you put C here, है ना। आप कुछ भी भरें इसमें और आप दे देंगे। Now, I'm illustrating it to you so that you understand, because if I just say that in the first phase, the preference of the first, in the first phase of counting, the first preference votes are counted, and the one who has the highest number of first preference vote, if he or she wins, then the process is stopped, and if not, that if wins तो wins ही हो गया, and if not, there is no clear majority, 50 plus 1 वाला फिगर नहीं आया है, then the process is continued. The candidate of the least preferred vote, प्रेफरेंशियल में लीस्ट प्रेफर्ड वोट, उसको हटा दिया जाएगा, उसके सेकंड वाले को पहले में डाल दिया जाएगा। समझ में नहीं आया होगा, मेरे को भी नहीं आया था, सो आई विल इलस्ट्रेट टू यू। लेट्स से देयर आर 100 इलेक्टर्स, ठीक है, देयर आर 100 इलेक्टर्स। नाउ दिस इज ए, कैंडिडेट ए, दिस इज कैंडिडेट बी, दिस इज कैंडिडेट सी। देयर आर 100 इलेक्टर्स, 100 में से 40 लोगों ने इनको फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, इनको भी 40 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा, इनको 20 लोगों ने फर्स्ट प्रेफरेंस रखा। नाउ सी इज आउट फ्रॉम द रेस, द वन विद द लीस्ट फर्स्ट प्रेफर्ड वोट, दिस गोज आउट ऑफ द रेस, ठीक है। नाउ द ट्रांसफर ऑफ vote is set in motion now. Now this is important. The transfer of vote is set in motion. The ballots, ये जो ballots हैं 1 2 3 में जो आपका गया है ये ट्रांसफर हो जाएंगे to the second preferred candidate of these 20 people. The 20 people here, let's assume ये 20 जो हैं इनका फर्स्ट वाला वोट तो नहीं काउंट हुआ. Now there will be a transfer, single transferable vote, right? Single transferable votes.
This 20, let's say 15 people have put B as their second preference and 5 people have put C as their second preference. तो ये जो 15 है ये आ जाएगा B में, है ना, और सॉरी ए सी तो बाहर हो गए, और ये जो A है 5 लोग ये A में आ जाएंगे. नाउ 45 plus 5 by the means of transferable vote that I said, proportional representation by the means of single transferable vote, the president election. 5 यहाँ और ये जो 15 है, these 15 will come here. 40 plus 15, now this becomes 55, this becomes 45. We have a winner. B is the president. Correct? I hope you're all clear with this, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है. And all the disputes relating to the election of president shall be taken up by the Supreme Court, whose decision shall be final. और अगर प्रेसिडेंट का इलेक्शन 6 महीने बाद, 8 महीने बाद, और से 4 months later it's declared void, all the acts of the president that has so been performed are not invalidated. ठीक है, इट्स नॉट लाइक कि मैनर इलेक्शन को void ठहरा दिया सुप्रीम कोर्ट ने ड्यू टू एनी ऑफ द रीजंस, एनी रीजन, बट द actions that has so been performed by the president, that will not be invalidated. ठीक है, just give me a second, I'll have some water. Term of president office is given in Article 56, I guess. Term of office, yeah, term of office Article 56 में दिया है. Now election of the president हो गया, term of office 5 years. 5 years होता है term of office. Just a minute. 5 years is the term of office of the president of India. Just had a message, I'm sorry. हाँ, तो Article 56 gives the term of the president. The term of the president shall be 5 years and there is no foundation on the re-election of the same person as the president. Now, the president of India who happens to take oath from the date of taking oath, 5 साल वहाँ से गिना जाएगा. ठीक है, I'm sorry for my pauses, but at times it gets very monotonous to just look at the camera and speak with having no human interaction around. So pardon me for that, but I will try to minimize it. है ना? So term of president office is 5 years. It is given under Article 56. Article 61 talks about the removal of president. There's a term for the removal of president, that is impeachment. Impeachment is the term that is used for the removal of the president. The president can be removed on the ground of violation of the constitution. The phrase that is used is violation of the constitution. But it is also important to note, violation of the constitution कहीं defined नहीं है. ठीक है, the violation of constitution is not defined anywhere. तो फिर ये क्या होगा? अब ये यही होगा कि पता चलेगा जब impeach होंगे, because no president has been impeached so far. There has been no president who has been impeached so far, right? So impeachment, it is a sort of quasi judicial process और नोटिस देना पड़ता है 14 दिन का. उसके बाद आप इनिशिएट कर सकते हैं impeachment और फिर उसके बाद impeachment, मान लो कि impeachment हो गया या फिर कुछ भी हो जाता है, तो who will be acting as the president? Vice president. चलो इसी के साथ नेक्स्ट उस पे आते हैं अपन, वैकेंसी. ठीक है,
इसके बाद वैकेंसी करना है हमें, हाँ वैकेंसी करना है, उसके बाद पावर्स है। पावर्स वाला टॉपिक थोड़ा इंटरेस्टिंग है। वैकेंसी कैन बी ईदर ड्यू टू, आई विल सिट डाउन बिकॉज इसमें कुछ लिखने जैसा है नहीं। वैकेंसी कैन बी ड्यू टू, नॉर्मल वैकेंसी हो सकती है बाय द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट। नाउ एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर के पहले ही इलेक्शन कंडक्ट करा दिया जाता है। बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द टेन्योर ऑफ द प्रेसिडेंट द इलेक्शन इज यूजुअली हेल्ड, बट इफ इन केस देयर इज एनी डिले टू होल्ड द इलेक्शंस ऑफ द प्रेसिडेंट ड्यू टू द फैक्ट दैट लोकसभा माइट बी डिसॉल्व्ड एट दैट टाइम, है ना, ये ऐसा भी तो हो सकता है। लोकसभा अगर डिसॉल्व हो गई या किसी भी कारणवश प्रेसिडेंट का, राष्ट्रपति का इलेक्शन नहीं हो रहा है, if the president's election is not held before the tenure ends, the vice president will not be acting as the president in this case. The outgoing president will continue acting as the president until new elections are held. If there is a slight delay, the president will continue to act as the president. Okay? वाइस प्रेसिडेंट यहाँ पे नहीं होंगे। उसके बाद क्या हो जाएगा, रेजिग्नेशन हो सकता है, रेजिग्नेशन हो सकता है, इम्पीच लिख देता हूँ, रेजिग्नेशन हो सकता है, डेथ हो सकती है ना, और क्या हो सकता है, एक्सपायरी, टेन्योर तो वो ऊपर वाला मैं बता ही दिया, टेन्योर खत्म हो जाए तो वो उसमें तो इलेक्शन होना ही है, वो ही रहते हैं, तो इनको उतना ध्यान मत दो, ये वाले को रिजाइन कर दिया, डेथ हो गई, या फिर इम्पीचमेंट हो गया, या फिर डिस्क्वालीफाइड ही हो गया यार, मतलब सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन को अवॉइड कर दिया, ये भी तो हो सकता है। SC डिक्लेयर्स इलेक्शन वाइड, या फिर व्हाट यू कॉल impeachment. Now in these cases the vice president will act as president, है ना। If the vice president is not present, who will act as the president? The Chief Justice of India. If the Chief Justice of India is not present, the senior most judge of India. If the senior most judge is not present, next senior most judge, है ना, ऐसे ही चलते जाएगा। अब ऐसा तो होगा नहीं कि सारे ही जज प्रेजेंट ना हो। तो vice president will act as president for a maximum period of 6 months, and at the time when the vice president is acting or any other person is acting as the president, they will undergo the same oath taking and will be eligible, or will be not eligible, will be given the salary emoluments and allowances according to the president. If VP becomes acting president, he will be given the facilities of president itself. ठीक है। राष्ट्रपति भवन without the payment of rent, use of the official residence of Rashtrapati Bhavan, it's huge. If the ones in Delhi you have not visited, must see. ठीक है। Vice president acts as the president, but for a maximum period of 6 months. There shall be acting president for a maximum period of 6 months until उस टाइम तक आपको इलेक्शन कराना ही कराना है। ठीक है। और वैकेंसी ऑफर्स ड्यू टू रेजिग्नेशन और ये डेथ और ये सब, तब तो वाइस प्रेसिडेंट एक्ट्स एज प्रेसिडेंट, बट एट टाइम्स व्हेन द प्रेसिडेंट इज अनअवेलेबल, प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पोस्ट भरी हुई है, बट प्रेसिडेंट इज अनअवेलेबल, सपोज 2 दिन की छुट्टी में या जो भी है, the vice president will discharge the duties of the president, and if vice president is not present, then the same order of precedence for the post, Supreme Court Justice, Chief Justice of India, then the Supreme Court Justice, senior most. तो डिस्चार्जिंग और एक्टिंग में फर्क ये है कि एक्टिंग प्रेसिडेंट तब बनेंगे जब प्रेसिडेंट की कुर्सी खाली है, ठीक है, एंड व्हेन द प्रेसिडेंट is in the office, the president is there, for instance due to a certain illness or vacation or anything, the president is not there, then the vice president shall discharge the duties of the president, and even when discharging the duties of the president, they are all entitled for the facilities of the president. That is immunities and even immunities. Immunities, did I tell you? Okay.
द इम्यूनिटी ऑफ द प्रेसिडेंट, या फिर उसको अपन उसमें ही कर लेंगे, नहीं चलो सुन लो। अच्छा, जस्ट लिसन फॉर अ मिनट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इम्यून फ्रॉम क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स। दिस इज अ फैक्ट काइंड ऑफ थिंग दैट यू कैन ऐड, लिख रहे हो तो फैक्चुअल पॉइंट। द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया is immune from any criminal proceedings during his tenure as the president. The president of India is immune from criminal proceedings during his tenure as the president for the acts done in his personal capacity, not as the president, in his personal capacity, in his or her personal capacity, ठीक है? और they are also immune from civil proceedings up to an extent, not completely. Criminal में तो completely भाई you cannot go ahead, but civil में होगा 2 महीने का नोटिस देना होगा, उसके बाद किया जा सकता है for the acts in his personal capacity, ठीक है? Now a very important thing, what's next that we have to study, क्या था? Powers. Yes, this is very interesting topic, powers. Powers of president are very, क्या कहना चाहिए, interesting to study about powers of president. Now there are not tons, but quite a lot of powers that the president enjoys. Number one is the executive power. All the executive actions are taken on his name or her name. Article 53. Executive power के बाद, अच्छा तीनों ऑर्गन ही लिख लेते हैं ना अपन, जुडिशियल पावर, लेजिस्लेटिव पावर, 3 हो गया। इसके बाद मिलिट्री, इसके बाद इमरजेंसी पावर। ये एक अलग में ही टॉपिक है, सो आई विल नॉट बी टेलिंग अप टू यू अबाउट दिस। इसका बस जान लो 352, 356, 360, ये अभी मैं बता देता हूँ, जस्ट स्मॉल ब्रीफ। आर्टिकल 352 टॉक्स अबाउट नेशनल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी मतलब कॉमनली नोन एज नेशनल इमरजेंसी, वॉर ड्यू टू एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रेबेलियन। द फ्रेज दैट इज यूज्ड इज आर्म्ड रेबेलियन। पहले इंटरनल डिस्टर्बेंस था, ठीक है, व्हेन द इमरजेंसी वाज इवोक्ड, देयर इज ओनली वंस दैट द इमरजेंसी हैज बीन इन्वोक्ड। उस टाइम पे इंटरनल डिस्टर्बेंस था, वो फ्रेज को फिर बदला गया 44th अमेंडमेंट एक्ट में, उसको किया गया आर्म्ड रेबेलियन, ठीक है। 352 ये बोलता है। 356 जो स्टेट्स में होता है प्रेसिडेंट रूल, है ना, व्हेन द स्टेट्स मशीनरी फेल्स द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस are not to say under threat, but the state machinery, the legislative assembly has no clear majority, ये सब तब जाके president rule लगता है। and article 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी का होता है, फाइनेंशियल क्रेडिट पे जब फाइनेंशियल स्टेबिलिटी जब ठीक नहीं रहती है तो ये अलग ही पूरा टॉपिक है, डिटेल में पढ़ेंगे जब अपन इमरजेंसी करेंगे, राइट। वन अदर पावर इज फाइनेंशियल पावर, मिलिट्री पावर हो गया, डिप्लोमेटिक इसी में लिख लो, डिप्लोमेटिक, है ना। और क्या होगा, वीटो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ वाज आई फॉरगेटिंग दिस यार। वीटो जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट पावर है प्रेसिडेंट की। इंडिया में एब्सोल्यूट वीटो है, सस्पेंसिव वीटो है और पॉकेट वीटो है, ठीक है। वी विल स्टडी अबाउट दिस इन डिटेल। और एक और वीटो जो है वो है वीटो विथ रिस्पेक्ट टू स्टेट बिल्स। This is an exceptional kind of power that is conferred with the president. This is given under Article 201, veto with regard to state bills. Military हो गया, legislative हो गया, emergency हो गया, financial diplomat सब तो हो गया। आर्टिकल 111 पे वीटो है अपना, ये आर्टिकल 111 पे दिया हुआ है। एक ओवरराइडिंग वीटो भी होता है,
ठीक है। एक ओवर राइडिंग वीटो भी होता है जो इंडिया में नहीं है। मॉडर्न स्टेट्स जो आजकल हैं हमारे मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट्स, उनमें एक ओवर राइडिंग वीटो होता है। फॉर इंस्टेंस द ओवर राइडिंग, आई डोंट नो द टेक्निकल टर्म, आई एम सॉरी। उसमें ये होता है सस्पेंसिव, नो सस्पेंसिव तो अपना है, ओवर राइडिंग ही बोल लो। द बिल व्हेन प्रेजेंटेड टू द हेड ऑफ द स्टेट, इट गोज बैक टू द पार्लियामेंट और द हाउस इन द स्टेट्स वेयर देयर इज सच सेटअप फॉर ओवर राइडिंग वीटो। ज़्यादा मेजॉरिटी से उसको पास करके भेज दिया जाए तो फिर वो पास होगा। ये एक वीटो रहता है। दैट इज़ नॉट इन इंडिया, सो वी नीड नॉट स्टडी अबाउट दैट। नाउ एग्जीक्यूटिव, जुडिशियल, लेजिस्लेचर, पार्डनिंग पावर्स, यस दैट्स व्हाट आई वाज फॉरगेटिंग। जुडिशियल में ही कह सकते थे, लेकिन दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पार्डनिंग इज इंपॉर्टेंट। और लेजिस्लेटिव में एक आता है ऑर्डिनेंस मेकिंग। Ordinance making under Article 123 and pardoning is under Article 72. ठीक है। और ये 111, 201, this is very important, pardoning वाला। Now before telling you about powers, I'll just briefly read out to you what are the executive powers, because that's not really much. Executive powers वही है, the appointments and everything all are taken in the name of the president only, and he appoints the chairperson of say UPSC, governor, selection commissioners, CAG and everyone, ठीक है। और he can seek any information relating to the administration of affairs of the union and proposals for legislation from the prime minister। और एग्जीक्यूटिव में और कोई खास तो पावर वही, मतलब अपॉइंट्स द प्राइम मिनिस्टर एंड होल्ड द ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर। बट ड्यूरिंग द प्लेजर में वही मैंने अभी आपको बताया था, राम जवाया केस 1955, द प्लेजर इज ऑन द एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ठीक है। एंड हाँ, एक जो अच्छा है, दैट इज ही और शी, द प्रेसिडेंट डायरेक्टली एडमिनिस्टर्स द यूनियन टेरिटरी और थ्रू एडमिनिस्ट्रेटर्स अपॉइंटेड बाय हिम और हर, ठीक है। आर्टिकल 239 है ये। नाउ लेजिस्लेटिव पावर्स में थोड़े से इंपॉर्टेंट पावर्स हैं। ऑर्डिनेंस मेकिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, बट द प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग द पार्लियामेंट एंड डिसॉल्व द लोकसभा। ही कैन समन अ जॉइंट सिटिंग एज वेल, ठीक है। तो द प्रेसिडेंट कैन समन और प्रोरोग मतलब डिसॉल्व नहीं, बट स्थगित कर देना, है ना, स्थगित कर देना, नॉट डिसॉल्व। और पार्लियामेंट का पहला सेशन में ही और शी कैन एड्रेस एंड ही और शी कैन अपॉइंट एनी मेंबर ऑफ द लोक सभा व्हेन द स्पीकर एंड डिप्यूटी स्पीकर इज वेकेंट। ऑल्सो राज्यसभा में 12 लोग को नॉमिनेट करते हैं। कहाँ कहाँ से करते हैं? आर्ट, साइंस, लिटरेचर, आर्ट, साइंस, लिटरेचर एंड सोशल सर्विस। हाँ, सचिन तेंदुलकर वॉज ऑल्सो अपॉइंटेड, but he was not falling exactly under any of these what you call categories. So look into it, how was he appointed? This is a homework for you. And he is और क्या बोल सकते हैं लेजिस्लेटिव पावर में? बिल्स को पास करने को लेके वीटो, वो वीटो में हम लोग डिस्कस कर लेंगे एग्जाम्पल्स के साथ। और हाँ, बस इतना ही है। और ऑर्डिनेंस, वीटो और ऑर्डिनेंस ये जो है, ये भी एग्जीक्यूटिव पावर ही कहोगे। वीटो और ऑर्डिनेंस को लेजिस्लेटिव में मैंने लिख दिया है। सॉरी, लेजिस्लेटिव ही कहोगे, एग्जीक्यूटिव नहीं कहोगे, दोनों को लेजिस्लेटिव पावर ही होगा आपका ये ऑर्डिनेंस मेकिंग और व्हाट यू कॉल दिस वीटो, दोनों लेजिस्लेटिव पावर ही है उनकी। फाइनेंशियल पावर्स क्या है? He can make advances out of the contingency fund of India for the unforeseen circumstances. Only by his prior recommendation the money bill is introduced. ठीक है, आर्टिकल 112 मनी बिल। और he constitutes a finance commission every 5 years. You can note these all down what I'm telling you, but ये उतने मेजर नहीं है, ठीक है। मेजर तो हमारा फिर वही आएगा, वीटो, पार्डनिंग और ये लेजिस्लेटिव, है ना। जुडिशियल पावर में वही है, अपॉइंट्स द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एंड सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस,
Seek advice from the Supreme Court on matters of law and fact. This is one of the important judicial powers of the president, that he or she can seek advice from the Supreme Court judge on any question of law or fact, but the advice tendered by the Supreme Court is not binding. This is also important to note. The advice tendered by Supreme Court is not binding. And other than that, diplomatic powers, the ones like receiving the ambassadors who come to visit India, and all the official international forums and agreements, treaties, the international treaties and international agreements, multinational agreements, all are signed on the name of the president. Military powers, as I mentioned in the beginning itself, 53 close to, the president shall be the supreme commander of the defense forces, right? And he can declare war and conclude peace. So the president, only she can or he can declare war or conclude peace. ठीक है? Emergency powers मैंने बता दिया, 352, 356, 360. This is a whole another topic. ठीक है? Now let's talk about veto. Veto थोड़ा सा technical है, it will take time. When we're talking about veto, as I mentioned, in India, we have 3 categories: absolute, suspensive and pocket veto. Absolute veto, जो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा, that is withholding the assent. Now, Article 111 of the Constitution says that the president, when a bill has come to the assent of the president may give assent to the bill, may withhold assent to the bill, or may return the bill for reconsideration. ठीक है? May withhold the assent, may return the bill for reconsideration, or give the assent. तो सबसे पहले तो वीटो में हमारे पास है एब्सोल्यूट वीटो इंडिया में, एंड देन वी हैव सस्पेंसिव वीटो. देन वी हैव पॉकेट वीटो. ठीक है? पॉकेट वीटो हुआ, सस्पेंसिव वीटो हुआ, और ये वीटो क्या कहते हैं, एब्सोल्यूट वीटो. ठीक है? नाउ एब्सोल्यूट वीटो, आफ्टर वीटो व्हाट वी हैव टू डू, प्रेसिडेंशियल वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन भी करना है. ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, वीटो ओवर स्टेट लेजिस्लेशन, ये 201 में दिया है. ठीक है? Just a minute. Absolute veto means withholding the assent completely. Usually done in cases of, बहुत कम ही होता है ये, बट यूजुअली होता है प्राइवेट मेंबर्स के बिल में, या फिर गवर्नमेंट बिल्स when the Lok Sabha dissolves and the new Lok Sabha advises not to give assent to the bill. मान लो अभी इलेक्शंस होते हैं और गवर्नमेंट ए इज रनिंग, party A is running the government, or coalition A is running the government. The party in the election loses, but at the last day of the session they pass a bill and send it to the assent of the president. But before the president could assent the bill, the next Lok Sabha assembles and they advise the president not to give assent. So the president is bound, है ना? President is bound by the aid and advice of Council of Ministers. Absolute veto ये दोनों केसेस में होता है. ये हुआ था 1954 में, when Dr. राजेंद्र प्रसाद was president. पेप्सू appropriation bill, जब प्रेसिडेंट्स रूल लगा हुआ था तब आया था पेप्सू appropriation bill. But the bill was passed by the parliament when what I told you यार, अरे प्रेसिडेंट रूल जब, हाँ, प्रेसिडेंट रूल वॉज इन ऑपरेशन ऑफ द स्टेट ऑफ पेप्सू, तब ये हुआ था. बट जब एसेंट के पास गया, द प्रेसिडेंट रूल वॉज रिवोक्ड.
है ना, ये होगा। तो एब्सोल्यूट वीटो तो उतना वो नहीं है। सस्पेंसिव वीटो, सस्पेंसिव वीटो मीन्स सेंडिंग द बिल बैक टू कंसिडरेशन, reconsideration, not consideration, reconsideration. In the year 2006, Dr. Kalam, who was the president, Dr. Kalam, the president, he sent the NAC, the bill for making the NSA chairperson out of the Office of Profit as an exception. Sonia Gandhi was the NSA chairperson. The bill was sent to the President of India, the then President, Dr. Kalam. Dr. Kalam returned the bill for reconsideration. ठीक है, Dr. Kalam returned the bill for reconsideration. It exempted the office of the chairperson of NSA from the inclusion in Office of Profit. Office of Profit से exclude किया गया था NSA chairperson को, क्योंकि if you are holding Office of Profit, you cannot be a member of Parliament, right? Now, this bill was sent for reconsideration, but there's a twist here. Reconsideration के लिए वापस तो भेज दिया आपने, पर अगर वो reconsider कर लिया है पार्लियामेंट ने, if the parliament has reconsidered it and when it comes back to you as the president, you are obligated to sign it, you cannot reject. ठीक है, when the bill comes to you again after reconsideration with or without amendment, you have to give the assent. ठीक है, तो इसमें क्या हुआ था, bill was sent back for reconsideration but was sent again without any reconsideration हुआ, but without any changes, it was sent back and president gave assent. ठीक है, now pocket veto, this is very interesting topic. In this case the president neither ratifies nor rejects. ठीक है, the same thing is like pocket veto. ये बिल है, ये पॉकेट में मैंने रख लिया, अंदर छिप गया, बिल छिप गया, मैंने ना बिल को निकाला, ना बिल को हटाया, ना बिल को रखा, मैंने छिपा पॉकेट में रख लिया है। मैंने ना इसको साइन किया है, ना विथ होल्ड किया है, रेटिफाई भी नहीं किया, रिजेक्ट भी नहीं किया, पॉकेट में रख लिया। ये पॉकेट ये है, ये पॉकेट में रख लिया, ठीक है। नाउ वीटो, पॉकेट वीटो जो है, दिस वाज यूज्ड बाय who was the president, I'm forgetting the name, when Rajiv Gandhi government passed that amendment to the Postal Act. Wait, let me check if I can see. I have not written in my bullet points, I guess. No, I have not. 86 में कौन था? 85 गवर्नमेंट 86, ज्ञानी जैल सिंह, आई गेस 86 85 की बात है ये, मस्ट बी ज्ञानी जैल सिंह। सो जो ऑफिस अमेंडमेंट, जो इंडिया पोस्ट ऑफिस अमेंडमेंट बिल जो पास हुआ था 85 86 है, आई डोंट रिमेंबर, आई एम सॉरी। ज्ञानी जैल सिंह, हाँ, ज्ञानी जैल सिंह वॉज द प्रेसिडेंट इन 86 प्रॉबेबली वॉज द ईयर। सो उस टाइम पे Gyani Zail Singh did not give assent to the bill and neither did he return the bill for reconsideration. The bill actually restricted freedom of press, so he did not give assent, kept it in his pocket for 3 years and then sent it back for reconsideration when the new government was formed. But the new government, they decided to drop the bill, है ना, National Front, I guess. सस्पेंसिव वीटो, सॉरी, पॉकेट वीटो का ये एग्जांपल है। पॉकेट वीटो यहाँ पे एक और चीज़ इसलिए इंपॉर्टेंट है इंडिया में, बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट प्रोवाइड एनी ऑब्लिगेटरी टाइम ब्रैकेट फॉर द प्रेसिडेंट, ठीक है। इन द केस ऑफ पॉकेट वीटो ऑफ इंडिया, द प्रेसिडेंट, सॉरी, इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इन द केस ऑफ पॉकेट वीटो ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, देयर इज नो स्पेसिफिक टाइम बाउंडेशन, कोई मुद्दत नहीं है इसमें। देयर इज नो टाइम ब्रैकेट फॉर द प्रेसिडेंट to form what you call, to give assent or to withhold the assent. There is no time bracket that is mentioned in the constitution, right? But in USA में क्या है, USA में there is a time bracket of 10 days. You have to when the bill comes, you have to give assent to the bill within 10 days. But in India, there is no such time bracket that is mentioned that the president has to pass the bill or withhold the assent of the bill in this time bracket.
That's why we say that the pocket of Indian president is bigger than the pocket of American president. It is said that. Now, एक और जो है ये वाला veto over the state legislation. The president can send the president can reserve the bill of passed by the state legislature to be sent to the president for consideration. ठीक है? Now, what does president have here? He has the veto over this state legislature bills. He may give his assent to the bill. ठीक है, एक तो वो assent दे सकता है, या तो withhold कर सकता है, या फिर return the bill for reconsideration or reserve for the consideration of president. Sorry, the governor in case of legislature bills, he may give assent, he may withhold assent, he may reserve it for the president's consult or send back reconsideration, है ना? Now, when the state governor of the state reserves the bill for the assent of the president is not bound again to pass the bill. The president may sign or may give assent to the bill. He may withhold the assent to the bill, or he may direct the governor to return the bill for reconsideration. However, if the bill is passed again with or without amendments and presented again to the president for the assent, the president is not at all bound to pass it. Okay? So the veto power of president in this case, as given under Article 201, the veto power of president cannot be overpowered by it cannot be overridden by state legislature. It can be overridden by parliament, है ना? Parliament में हमने देखा था suspensive veto में, when the bill is sent back to the parliament for reconsideration, डॉक्टर कलाम वाला एग्जाम्पल दिया था मैंने, एनएससी चेयरपर्सन को एग्जाम्प्ट करने वाला जो बिल था, that bill was sent for reconsideration, but then when it came back, उसको पास करना पड़ा डॉक्टर कलाम को, द बिल उनको पास करना पड़ा, ठीक है, उस बिल को पास करना पड़ा. बट इफ अ गवर्नर रिजर्व्स अ बिल फॉर द assent of the president, for the consideration of the president, then assent of the president, and the president sends it back or instructs the governor to send it back to reconsideration, and then the bill is again passed by the legislatures, respective state legislature, with or without amendment, it is not bound on the president to give assent. ठीक है? सो स्टेट लेजिस्लेचर का ये ओवर पावर नहीं कर सकता आपके इसको, प्रेसिडेंट के वीटो को. अब यहाँ से एक आप कनेक्ट करिए, फेडरलिज्म के ऊपर अगर क्वेश्चन आता है, बहुत बार ये क्वेश्चन किया जाता है कि इज इंडिया फेडरल, एंड मोस्ट स्कॉलर्स, और एक जो कॉमन थिंग दैट हैज बीन एक्सेप्टेड दैट इंडिया इज फेडरल बट little quasi-federal, not exactly and completely federal. India is not completely federal. That's what most of the scholars believe. You can quote such points. These are the points which you can where you can quote. Like for example, the president veto cannot be overpowered by the states, but by the parliament it can be overpowered. या तो होना चाहिए तो दोनों से होना चाहिए फेडरल में, या तो नहीं होना चाहिए तो दोनों से नहीं होना चाहिए, है ना? फेडरल में कंप्लीट फेडरल स्ट्रक्चर, एब्सोल्यूट फेडरलिज्म जिसको बोल रहे हैं. तो ये सारे पॉइंट्स, कनेक्ट द डॉट्स, connect the topics, don't categorize it, connect the topics, let the information flow, connect the topics, ऐसे ऐसे रिलेट करो आप, ठीक है? तो इसमें सिर्फ इसका आंसर नहीं मिलेगा, बाकी का भी मिल जाएगा आपको. अब आते हैं हम, अब क्या पढ़ना है, ऑर्डिनेंस मेकिंग लिखा है मैंने. हाँ, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया और बहुत इंटरेस्टिंग भी है. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, and what all cases I have to tell you about, I'll write it here itself. हाँ, कूपर केस तो लिखना ही है, एक डीसी वादा वाला भी था शायद. हाँ, डीसी वादा और कूपर, है ना? तो ऑर्डिनेंस गिवन अंडर आर्टिकल 123. अंडर आर्टिकल 123 द ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट इज गिवन. आई विल रीड इट. द Article 123 of the Constitution empowers the President to promulgate ordinances during the recess of Parliament. The ordinances are passed during the recess of Parliament. When one house, Lok Sabha, Rajya Sabha, both are not in function, not in session, or either one of the house is not in session, तब भी पास किया जा सकता है. ठीक है?
और इसके अलावा और क्या क्या कंडीशंस हैं? गिवन दैट द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड दैट सच कंडीशंस हैव कम अप दैट इट इज नेसेसरी टू प्रोमulgate एन ऑर्डिनेंस. सेटिस्फाइड, द प्रेसिडेंट इज सेटिस्फाइड. पहली कंडीशन, कंडीशंस ऑफ कंडीशंस, आई एम टेलिंग यू द कंडीशंस ना. फर्स्ट कंडीशन तो यही है कि सेशन में नहीं होना चाहिए. इफ द लोकसभा एंड राज्यसभा आर इन सेशन एंड द प्रेसिडेंट पास promulgates एन ordinance, that is void. That is void. Second क्या है? It has come to the president's satisfaction that it is essential to bring up an ordinance. But the satisfaction, the term that is the satisfaction, it can be questioned in the court of law on the ground that it is malified. ठीक है? Malified कैसे? मान लो कि the president himself dissolves a house. लोकसभा डिसॉल्व कर दिया. उस टाइम पे when president dissolves the Lok Sabha and then he or she is promulgating an ordinance, then it will be a ground that is malified intention. उस पे ये क्वेश्चन किया जा सकता है. किस पे हेल्ड हुआ था ये? कूपर केस. कूपर केस 1980 नहीं, इमरजेंसी के 70. कूपर से मेरे को शेल्डन कूपर ही याद आता है. Right. So Cooper case 1970, it was held that the satisfaction can be questioned on the ground if it is malified, and the question in the court of law on the ground of malified intention. ठीक है, second हो गया. Satisfaction मिटाया क्यों मैंने? चलो थर्ड लिख देते हैं. Satisfaction यहाँ पे लिख देता हूँ मैं. Satisfaction. Now third is the ordinance making power of the president has to be at par with the parliament. What you can say that at par with parliament, मतलब कि जो पार्लियामेंट के सब्जेक्ट्स हैं, यूनियन के सब्जेक्ट्स हैं, उन्हीं पे लॉ बनाया जा सकता है ना. ये इवन इट कैन बी मेड टू अमेंड टैक्स लॉज, है ना. इट कैन बी मेड टू ऑल्टर और अमेंड टैक्स लॉज एज वेल. इट कैन बी मेड टू अमेंड दी सब्जेक्ट्स ऑफ यूनियन लिस्ट, है ना. ऑर्डिनेंस इसके लिए पास किया जा सकता है. फोर्थ ग्राउंड जो है, आई फॉरगॉट द फोर्थ ग्राउंड. Assembly. So every ordinance that has been passed, laid down before फर्स्ट क्या था? लोकसभा राज्यसभा या इधर सेशन में नहीं है. सेकंड क्या है? सेटिस्फैक्शन विच कैन बी क्वेश्चनड ऑन द कोर्ट ऑफ लॉ ऑन द ग्राउंड ऑफ मैलिफाइड इंटेंट. कूपर केस 1970. थर्ड क्या है? एट पार विद द पार्लियामेंट. आई होप यू कैन सी इट. एट पार विद द पार्लियामेंट मतलब दे कैन ओनली मेक लॉज ऑन द सब्जेक्ट्स वेयर द पार्लियामेंट कैन मेक लॉज, है ना, यूनियन लिस्ट के. और सिंस इट इज कंसिस्टेंट विद दैट, then since it is consistent with the parliament, they cannot abridge or take away the fundamental rights. ठीक है. फोर्थ में है, it has to be laid down before the parliament. What does that mean? It has to be laid down before the parliament. When the parliament assembles, when the parliament comes into session, the ordinance must be laid down before the parliament. If the parliament does not take any action on the ordinance, it ceases to exist after 6 weeks from the date of assembly of the parliament. If both the houses have been summoned to assemble at different dates, the time bracket of 6 weeks shall be considered from the later date. लोकसभा को 10 तारीख को बोल दिया मान लो, राज्यसभा को 15, तो 15 तारीख से the period of 6 weeks will be calculated, right? And हाँ, laid down before the parliament. और अगर parliament can nullify it as well, if they pass a bill rejecting the ordinance, it will be nullified. And it can also pass the ordinance, it can also pass a bill which will in turn the ordinance into an act. ठीक है. The parliament will turn the ordinance into an act. And let's take a 1 minute break. I have to drink some water. Yes, so I'm back. Where were we?
लेट डाउन बिफोर द पार्लियामेंट, हाँ, तो 6 वीक्स के बाद वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा अगर कोई एक्शन नहीं लिया जाता है. तो द मैक्सिमम टाइम ब्रैकेट, the maximum time period for an ordinance to exist is 6 months. This 6 months being the maximum gap between 6 months being the gap between two sessions, plus 6 weeks. Six months plus 6 weeks, this is the maximum time that an ordinance can exist. Now, there was I'm sorry, I need to drink water again. Sorry, I had some issues in my throat. Now, 6 months plus 6 weeks, right? Also, this ordinance making power is rather unusual and exceptional, and this is not found in most of the democratic countries. But why do we have this? So Dr. Ambedkar, the rationale that he gave behind, or the reasoning that he gave behind this was ki it is for the executive to deal with the unforeseen or emergency situations, not to relate it with the emergency of Article 352. No, वो बिल्कुल अलग है ना? This is something very different. It was just to deal with the unforeseen circumstances. And also the rules of Lok Sabha state that whenever the ordinance has come to the laid down before the parliament, there shall be reasoning that why it was essential. There shall be a reasoning. It has to be substantiated by the reasoning. And so far there has been no case that has gone to the Supreme Court for questioning the promulgation of an ordinance. The Lok Sabha itself requires, wherever a bill seeking to replace an ordinance to be introduced in a house, a statement. मतलब जब भी एक bill whenever Lok Sabha require the rules of Lok Sabha, it requires that the bill seeking to replace an ordinance है, अगर bill उसको replace कर रहा है एक्ट करने के लिए, तो फिर उसको स्टेटमेंट से सब्सटैंशिएट करना पड़ेगा. आप ऐसे ही नहीं कर सकते, ठीक है? ये वाला तो पॉइंट इंपॉर्टेंट नहीं है, आई जस्ट न्यू, सो टेलिंग यू. हाँ, नो केस हैज़ गॉन टू द सुप्रीम कोर्ट फॉर द प्रोमulgation ऑफ ऑर्डिनेंसेस ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? बट DC वाधवा केस 1987, this is very important in this regard, in regard of ordinances. Between 1967 DC वाधवा case of 1987, the governor of Bihar during the period of 67 to 81 passed 256 ordinances. All of these within these years ranging from 1 to 14. ये 14 साल ही है, 1 से 14 साल, by promulgating them time to time. ये 6 महीना ये वाला जो ब्रैकेट है अगर इधर भी लगाओ आप, तो ये वो हो जाएगा सीज टू ऑपरेट, फिर से promulgate कर दिया. Supreme Court has observed that such repromulgation takes away what you call. Supreme Court ruled that the repromulgation of ordinance without any changes, this was done like ये repromulgate किए जा रहे हैं, 256 ordinances आ गए हैं, they are repromulgating all this. Bill passed by the assembly would amount to, wait a minute, it was the Sivatva or something else. Attempt to get the bill passed by the assembly would amount to the violation of constitution. Yeah, violation of constitution. Supreme Court has said that such acts represent violation of constitution. है ना? Without any changes, you're just over and over and over, you're passing the ordinance. This is a violation of the constitution. Why? Because it is the work of the legislature to make laws. The ordinance making power is an exception that is provided for the times of emergency, for the unforeseen circumstances. As said by Dr. Ambedkar, I just quoted him.
It cannot replace the legislative functions of the legislature, right? It cannot replace the legislature. It is just at times of emergency, unforeseen circumstances, right? Now ऑर्डिनेंस हो गया, ये बहुत टेक्निकल भी है और थोड़ा सा इसके बाद जो आ रहा है पार्डनिंग, दैट इज मच मोर सिंपलर रिलेटिव टू दिस. And time is running, we are running little lengthy. I'm trying to cut short my topics, but आधा अधूरा बताने से तो कोई मतलब है नहीं, है ना? तो आधे अधूरे में तो कोई फ़ायदा मुझे लगता नहीं होगा. तो वही है कि पूरी चीज़ें बताएं आपको, भले ही लंबा हो जाए. पार्डनिंग पावर ऑफ प्रेसिडेंट. Pardoning power under Article 72. What all power the president has? The president has the power to pardon. Now I will sit because I'm really tired, and I'll just write it here and I'll sit down and explain you. Remission. Respite. Reprieve. Now the president has the power to pardon, to commute, to remit, to respite or to reprieve the punishment that has been so awarded to a person. Punishment or sentence is for an offense against union. Punishment is by the court, martial court, ठीक है. Punishment is of the sentence of death. In cases में president can use the pardoning powers. Now it is an executive power, and it was held that the president power can only be exercised on the advice of Council of Ministers. This is not discretionary, on advice. अरे यार उठना ही पड़ेगा. The pardoning power is on advice of Council of Ministers and not discretionary. When was this held? It was held in Maruram case. (1981). And also the exercise. And it is also subject to judicial review, na? System of checks and balances that we have in India is very extensive. Now you see, यहाँ से नहीं तो वहाँ से, वहाँ से नहीं तो वहाँ से, you have a lot of ways. So for instance, if you get a punishment in district court, you go to high court. डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी वो है अपर लोअर. क्रिमिनल में जाते हो तो सेशन में जाने से पहले जेएमएफसी के पास अगर आता है, उसके बाद जाएगा सेशन में, उसके बाद जाएगा हाई कोर्ट में. फर्स्ट जेएमएफसी, जस्ट गिविंग एन एग्जांपल, जेएमएफसी, देन गोइंग टू द डिस्ट्रिक्ट सेशन कोर्ट, देन गोइंग टू द हाई कोर्ट, देन गोइंग टू द सुप्रीम कोर्ट, देन गोइंग टू द प्रेसिडेंट यूजिंग योर रिप्राइव, है ना. देन even if the president has not provided you the pardoning power, you can still go back to again Supreme Court that it was nullified. The pardoning power of president can be questioned on the ground that it is nullified or discriminatory. It was held in April, if I don't know, I'm judicial review, under judicial review, the pardoning power. When was this held? Epru Sudhakar case 2006,
है ना, एप्रू सुधाकर. I don't know if I'm pronouncing the name correct. एप्रू सुधाकर, case 2006. Now, what is pardoning? Pardoning means complete acquittal. ठीक है. Pardoning means that removes the sentence completely. If someone has been given death sentence, माफ कर देना. Complete क्या कहते हैं, sentences, complete nullifying the conviction. That is pardoning. Commutation को आप ऐसे याद रखिए कि commute करते हैं आप from one place to another place, you commute, right? तो this, the power of commutation means substituting a punishment with a softer form of it. For instance, अगर आपको award हुआ है death punishment, substituting it with life imprisonment, or substituting a rigorous imprisonment of say 10 years to a simple imprisonment of 10 years. ठीक है, substitute करना. No, हाँ, rigorous to simple, ठीक है. और one thing that you have to note, a factual point, क्या बताने वाला, what I was about to tell you यार, I just forgot. हाँ, life imprisonment is always rigorous. Life imprisonment can never be simple. Life imprisonment is always rigorous. ठीक है, this is a fact point. If you can like side में लिख लो, note वोट करके कुछ लिखना है तो. Now remission implies that the conditions of the punishment is the same, the punishment is the same, but the duration has been decreased. 2 साल के लिए rigorous imprisonment दिया या 2 साल के लिए simple imprisonment दिया, that may be reduced to 1 year. ठीक है, the nature of the punishment is not changed, the time period or the duration of the punishment has decreased. And commutation means substituting with a softer punishment. ठीक है. Now respite means giving relaxation to the convict in the sentence due to any disability, special fact, not disability, due to some special fact such as disability is an example. I'm so sorry. Respite means giving relaxation in the punishment due to any special fact such as disability or pregnancy, है ना. And reprieve is basically it implies that a stay on the order. It implies a stay that you have been awarded so that you can seek pardon or commutation, right? I am looking what else we need to study. Constitutional position. Yeah, we're done. Now we have to move to the Prime Minister. Yes. Now before, sorry, not the Prime Minister, before the President, Vice President. No. Before we move to the Vice President, I'm just going through my bullet points if I have missed anything. हो गया. Done. So yes, we're done. Respite and reprieve, I hope you get it. I'll repeat again, respite and reprieve. I guess I messed up a little in these two cases. Respite means reducing the sentence due to a special fact such as disability or pregnancy. Reprieve means giving a stay on the execution so that they can seek commutation and pardon. ठीक है, स्पेशली डेथ सेंटेंस पे होता है ये, स्पेशली डेथ सेंटेंस पे होता है ये, वो रखना है आपको. नाउ व्हाट इज द अदर देन दैट व्हाट वी हैव स्टडीड कि इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन, प्रेसिडेंट तो स्टेट का हेड है, एंड देयर आर सर्टेन पावर्स दैट वी हैव स्टडीड. ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर कितनी इंपॉर्टेंट थी, है ना. बट उसके अलावा हम लोगों को और क्या पढ़ना है प्रेसिडेंट के बारे में, और कुछ खास नहीं है from academic point of view, but one line I'll quote, just listen to this. The 42nd Constitutional Amendment Act made the President bound by the advice of Council of Ministers headed by the Prime Minister. But the 44th Constitutional Amendment Act, that was by the Janata Party,
it authorized the president to require the council of ministers to reconsider such advice either generally or otherwise. However, he shall act in accordance with the advice tendered after such reconsideration. So basically, the president may return a matter for reconsideration of the ministers, but the reconsidered matter shall be binding on the president. ठीक है, ये था, ये एक उतना इम्पोर्टेंट नहीं था, जस्ट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन 42nd 44th अमेंडमेंट में जो हुआ था. नाउ वी हैव स्टडीड अबाउट द प्रेसिडेंट एंड व्हाई इज द प्रेसिडेंट एसेंशियल. ये आपके लिए क्वेश्चन है. what all we have studied, you must be knowing the answer by now, but to put in a gist, the president is not just a mere rubber stamp here. You remember this. Often I hear people saying that the position of president is just adding to the expenses or slowing the efficiency. It's not like that. Okay. And as what former President our former President Mr. R. Venkataraman said, that the position of the president is not just a mere rubber stamp, but it can be seen as an emergency lamp. Okay. So it can be used at times of emergency and not just at times, this irregular times, but as an emergency lamp. So that's what he said. And you do some work upon this, write your own, or think, just ponder upon this, that why is it essential. Checks and balances, hastily passing away of constitution, hastily passing away of bills, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल ना पास हो जाए, या फिर बफर रखने के लिए, ये सब जो भी पॉइंट्स हैं आप करिएगा. ठीक है. अब हम आ जाते हैं वाइस प्रेसिडेंट पे. वाइस प्रेसिडेंट विल बी वेरी शॉर्ट बिकॉज आई डोंट थिंक कि आपको ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत भी है, एंड टाइम इज़ ऑल्सो रनिंग अवे. नाउ वाइस प्रेसिडेंट, I'll be using the acronym Vice President, VP करूँगा ही मैं. ठीक है. Now, Article 63, under Article 63, it provides for a Vice President. ठीक है. Provides for Article 63 provides for VP. है ना. Article 64, ex officio chairperson of RS. Now you also note this, that this is very important provision, constitutional provision, that is Article 64. Article 64 says that the Vice President shall be the ex officio chairperson of the House of States. ठीक है. मतलब कि राज्यसभा का जो अध्यक्ष होंगे वो उपराष्ट्रपति ही होंगे. It is ex officio. Ex officio मतलब by the virtue of being the vice president, he or she shall be the chairperson of Rajya Sabha. Now, Article 65, it talks about VP discharging or acting as president. And finally, which is important, मतलब other articles भी हैं, but the one that you need to know is election of vice president, manner of election of vice president. ठीक है. Election of vice president is done by the members of parliament, member of parliament of both the houses. Now, very important thing to note here is the words I am orating around. The members of parliament of both the houses. That means the nominated members as well. While in the case of the president, the nominated members did not vote. The state assembly did vote, but the nominated members didn't, right, of the parliament. But in this case, in the case of vice president, the nominated members, the elected members, both of them will vote, but only of the parliament and not of the state legislature. The rationale behind this is that vice president, the president is the head of the state, whole पूरे state का head है, and vice president का जो major function है, that is as the chairperson of Rajya Sabha.
and it will be only on rare occasions that a vice president will be acting or discharging the duties of president. Usually the president himself or herself will be discharging the duties, right? They'll be performing. It will be only at rare times that the vice president is acting or discharging the duties of a president. So it is not very essential to put up all the states and to get their votes counted, right? So the rationale behind that has been given by Dr. Ambedkar. He said that due to the points that I just told कि ex officio chairperson राज्यसभा की उनका मेन काम तो यही है, and not about the president, and not to discharge the duties of president, because USA में जो है, USA में vice president is very important. USA में vice president, if the president vacates the office, the vice president shall be the president for the remainder of the term that is left. 4 साल का term होता है वहाँ पे president का. If the president resigns or dies in the United States of America, the remainder 3 years, after 1 year, if the office of, let's say if the office of president fall vacant by reason of death or resignation or anything, then the remainder of 3 years shall be the office of president for the remainder of 3 years shall be taken up by the vice president, right? But in India, it can only be taken up to a period of 6 months. उसके बाद आपको elections कराने ही कराने हैं, और जिस दिन से election होंगे, the day the election is held and the day the position of the president is fulfilled, from that day until 5 years, the term will be counted. It is not like the election will be for the remainder term. In India, we have different system. In USA, the things are very fixed. They have very rigid. 4 years है, 4 years ही रहेगा, the election will be held, right? The election of president will be held after 4 years only. The vice president will be acting as the president in case of any, what you can say, in case when the office of president falls vacant. But this is not the case in India, and that's why the rationale behind choosing the electoral college of just the member of parliament has been given. Now, qualification क्या है? Citizen of India, 35 years of age, no office of profit, member eligible to be a member of Rajya Sabha. Eligible to be a member of Rajya Sabha, not Lok Sabha. Why? Because this person will be the ex officio chairperson of Rajya Sabha. He is not a member of Rajya Sabha, or she is not a member of Rajya Sabha, but they do have a casting vote. Also remember this. Exercise the casting vote. Casting vote होता है इनके पास. ये लोग they are not member, but they do have a casting vote, right? What else we have to study about vice president? I don't think there's anything much more. And rest of the things are same here. The qualified is we. Election भी वही होता है, proportional representation and single transferable vote. And disputes are to be taken to the Supreme Court. Conditions of service, that's very common. Anything. And the removal of the president. Yeah, removal मैंने नहीं लिखा ना. Removal of the president under vice president under Article 67. A formal impeachment is not required for his removal. He can be removed by a resolution passed by a majority of all the members of Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha. ठीक है? I'll read it out again. Article 67 में removal है. इसमें formal process of impeachment नहीं लगता है vice president का. I'll read it out. A formal impeachment is not required for his removal. He can be removed by a resolution passed by a majority of all the then members of Rajya Sabha and agreed to by Lok Sabha. This means that the resolution should be passed in Rajya Sabha by an effective majority and in Lok Sabha by a simple majority. ठीक है? तो यही है. हाँ, ये रिमूवल में कोई ग्राउंड नहीं दिया इसका. जैसे कि रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट जो था इम्पीचमेंट का, उसमें टर्म भी यूज़ किया गया इम्पीचमेंट. देयर इज नो फॉर्मल सच लाइक इम्पीचमेंट. नोटिस यहाँ पे भी रहता है 14 दिन का, बट 14 दिन का रहता ही है, आई गेस. रहता है बिना नोटिस के थोड़ी देंगे. हाँ, 14 डेज नोटिस. बट कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड नहीं है कि ऑन व्हाट ग्राउंड
the impeachment. Like in President, Article 61, we studied that on the ground of violation of Constitution. Violation of Constitution, though not defined, but at least mentioned that violation of Constitution is there. But in case of the Vice President, it is nowhere mentioned that on what grounds he or she may be removed from the office. So removal वाला जो होगा वो राज्यसभा से होगा, राज्यसभा से वो पास हो इफेक्टिव मेजॉरिटी से, इफेक्टिव मेजॉरिटी, और लोकसभा से सिंपल मेजॉरिटी. ठीक है, इफेक्टिव मेजॉरिटी मतलब स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी 50%, 50% ऑफ स्ट्रेंथ माइनस वैकेंसी, और सिंपल मेजॉरिटी लोकसभा से. वी विल स्टडी मेजॉरिटी जब आएगा बिल्स का टॉपिक, वहाँ पे पढ़ेंगे. हाँ, और सारे जो इनके सैलरी अलाउंसेस एम्बुलमेंट्स जो भी होते हैं द वाइस प्रेसिडेंट, दैट इज in accordance to the position of chairperson of Rajya Sabha. Now, one more question must be arising in your mind, that if the office of the vice president falls vacant, as we studied in the previous topic, president के topic पे हमने पढ़ा था कि president का अगर office vacant हो जाए तो vice president takes charge, right? But if office of the vice president falls vacant, CGI will take the charge of president's office. We are talking about president, है ना? प्रेसिडेंट का ऑफिस वेकेंट है, वाइस प्रेसिडेंट विल टेक चार्ज. बट इफ वाइस प्रेसिडेंट ऑफिस इज ऑल्सो वेकेंट, सीजीआई विल टेक चार्ज ऑफ द प्रेसिडेंट. बट एट द सेम टाइम वाइस प्रेसिडेंट का ऑफिस अगर वेकेंट है तो यहाँ पे कौन है? यहाँ पे तो कोई रहा होगा ना, तभी तो यहाँ पे कौन रहेगा? क्योंकि प्रेसिडेंट के टाइम में हमने पढ़ा यहाँ पे कोई होना चाहिए था. आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन आया था पहले, देन यू आर अ वेरी क्यूरियस एंड गुड स्टूडेंट, कि प्रेसिडेंट का ऑफिस vacant है, this is vacant, this is also vacant, then we move to CGI, no? But VP जो है वो इसके फंक्शंस कौन कर रहा है फिर? अगर ये भी वेकेंट है और ये वेकेंट हुआ, ये वेकेंट जब हो उससे पहले से ये वेकेंट रहा होगा. You're getting my point? If the office of the president falls vacant and the vice president's office is already vacant, then who was acting as the vice president? Was the Chief Justice of India acting as vice president? No. If the office of the vice president acts vacant, the vice president's office shall remain vacant until the election. But since most of the work of the vice president, the primary work and even the salary and allowances and everything has been given to him or her in the capacity of the chairperson of Rajya Sabha, the deputy chairperson of Rajya Sabha shall be acting as the chairperson of Rajya Sabha until a new vice president is elected. This was something interesting, and other than this we're all done. तो VP का भी हो गया है. वाइस प्रेसिडेंट में और ज़्यादा इम्पॉर्टेंट academically I don't think there is anything else. One mere not fun fact, but fact with Vice President's offices, when Mr. Muhammad Hidayatullah, who also happened to be former Chief Justice of India, he was the Vice President. When he was Vice President, he acted as President on multiple occasions. So acting as President on multiple occasions made him the only person, I think I quoted this on the preambles class as well, so it has made him the only person until now who has been the Chief Justice of India, who has been the Vice President of India, and also the President of India, because he has acted as the President of India several times when he was this Vice President. ठीक है, तो इतना ही आज के लिए, and thank you for being here. If you were here until now, we are done with the topic of President and Vice President, and we will meet soon. Thank you.